फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज द ईजीएस्ट वे टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। फ्रेंड्स, कुछ साल पहले एक साइंटिस्ट मुझसे मिलने के लिए आए। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे स्कूल में मुझे इंग्लिश का बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा है, मेरे कॉलेज में भी मुझे इंग्लिश का बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा है। मैं 6 साल से जॉब भी कर रहा हूँ और मैं बहुत सारी ईमेल्स लिखता हूँ रोज़, बहुत सारी रिपोर्ट्स लिखता हूँ और मैं रिसर्च साइंटिस्ट हूँ तो बहुत सारी रिसर्च भी करता हूँ। मेरी वो कैब भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर जब बोलने की बात आती है मैं बोल नहीं पाता हूँ। और इसकी वजह से मैं पिछले 6 साल में एक भी इंटरव्यू देने के लिए नहीं गया हूँ। कहीं ना कहीं मेरी ग्रोथ स्टक हो गई है। हो सकता है ऐसा आपके साथ भी हो रहा हो कि आप ईमेल्स बहुत आसानी से लिख पाते हो, रिपोर्ट्स बहुत आसानी से बना पाते हो, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश यू आर स्टक समवेयर। यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर व्यूज कॉन्फिडेंटली एंड comfortably. So, what is the best way to speak English fluently? What is the easiest way to speak English fluently? Let's find out. You can see a very small script on the right hand side. Let me tell you what it is about. इंग्लिश बोलने का जो सबसे अच्छा तरीका है, आप छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स को यूज कर सकते हैं इंग्लिश को अपनी जबान पे लाने के लिए, फ्लुएंसी को इंक्रीज करने के लिए। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इस स्क्रिप्ट के थ्रू आप कितनी आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, पहले हम इस स्क्रिप्ट को आराम से पढ़ेंगे 2 3 4 बारी। ठीक है, आप अगर एक बार ही पढ़ना चाहते हैं तो एक बार ही पढ़ सकते हैं, बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप 2 3 4 बार आराम से किसी भी स्क्रिप्ट को, किसी भी चीज़ को पढ़ें, ताकि आपके माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी हो बोलने से पहले। एक बार आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाए तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। चलिए स्क्रिप्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। What I want to do for me, here are 3 things I want to do. I want to go on a world tour since I love traveling to new places. I want to become a good public speaker so that I can speak confidently before a big crowd. I want to learn singing as it is my favorite hobby. Again, here are 3 things I want to do. I want to go on a world tour since I love traveling to new places. So first idea is world tour. I want to become a good public speaker so that I can speak confidently before a big crowd. Second idea is becoming a public speaker. Third, I want to learn singing as it is my favorite hobby. Singing. So यहाँ पे हम 3 आइडियाज की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट 3 आइडियाज: वर्ड टूर, पब्लिक स्पीकर एंड सिंगिंग। ठीक है, तो इन 3 कीवर्ड्स को हम नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे मैं दिखाता हूं कि किस तरह से आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट करनी है। तो नाउ यू कैन सी 3 keywords on your screen. We'll just use these keywords to practice English, right? So these keywords are word tour, public speaker and singing, right? Before we start practicing, one thing you need to make sure you're very comfortable, very relaxed, like I'm sitting on my sofa, right? So you can be walking in your room, you can be sitting on your couch or bed, or you can take any comfortable position. You need to be very comfortable. You need to enjoy what you are doing. And I just want to tell you something: if you enjoy something, the speed of learning doubles or triples, right? चलिए start करते हैं practice. We'll just use these keywords. Here are 3 things I want to do. First, I want to go on a world tour because I love traveling to new places. Second, public speaker. I want to become a public speaker so that I can speak confidently before a big crowd. Third, I want to learn singing because it is my favorite hobby. Right? So you can practice it 3, 4, 5 times unless you are very comfortable speaking it. Once you are comfortable, you can take some other script. It
Didn't even take me 30 seconds to practice this. Suppose you want to practice this 10 times. It's a 5 minutes job, just 5 minutes, right? So within 5 minutes, you can become comfortable with one script. So this is the simplest way to practice English speaking. This is the simplest way to bring English on your tongue. अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स हम कहाँ से लाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा कि हम नेट पे छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स को हम ढूंढते रहें। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम सभी या तो जॉब सर्च कर रहे हैं या ऑलरेडी जॉब में हैं, तो हमारे पास टाइम की फ्रीडम नहीं है इन स्क्रिप्ट्स को सर्च करने के लिए या आइडियाज़ को क्रिएट करने के लिए। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो स्क्रिप्ट मैंने ली है, ये स्क्रिप्ट मैंने ली है अपनी एक बुक में से, एंड द नेम ऑफ द बुक इज इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस फॉर बिगनर्स। ये स्क्रिप्ट मैंने ली थी इस बुक में से। इस बुक में ऐसी बहुत सारी लगभग 50-60 स्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं इंग्लिश की प्रैक्टिस करने के लिए, और इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है कि किस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है। फ्रेंड्स, if you are able to write English well but cannot speak fluently, I also invite you to join our online English speaking course that comes with 1 month money back guarantee and lifetime access. If you want to view that course, if you want to watch a couple of videos, the link of that course is also available in the description. If you have any query like this, you can write to me, or you can write in the comment box. Thank you.